हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पवन कुमार। आज आप देखने जा रहे हैं कि दुनिया में मैं अकेला ही हूँ ना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पवन कुमार। आज का न्यूज़ है कि मैं लाया हूँ आज बड़ी बड़ी खबर। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। क्या खबर है आज? आज मैं एक्टिंग एज ए न्यूज़ रिपोर्टर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज मैं बड़ी खबर लाया हूँ, बहुत बड़ी खबर। आज दुनिया की सबसे बड़ा खबर मैं ही लाऊंगा, उम्मीद रखिए। आज कोरोना वायरस ने दुनिया को बर्बाद कर चुका है, लेकिन अब वो जाने के बाद दूसरा वायरस आया है। उसका नाम है ओमिक्रॉन। ये सबसे खतरनाक वायरस है। इस दुनिया में क्या है पता है? ओमिक्रॉन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो नया वायरस है। उसका वैक्सीन अभी तक नहीं आया है। तो जारी रखिए, मैं उस वायरस के बारे में समझा रहा हूँ। ओमिक्रॉन वायरस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। इसका वेरिएशन शुरू हो गया है। अब क्या करें? अब पूरा जाने वो पूरा दुनिया फैलेगा। तब क्या करें? पूरा दुनिया में फैलने के बाद फिर लॉकडाउन होगा, बिजनेस डाउन, सब गया है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बच के रहिए और रूल्स को भी फॉलो कीजिए। तो कैसा बचे? सैनिटाइज कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए और सब कीजिए, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये सब कंटिन्यू करिए। जैसा लॉकडाउन में करते थे वैसा ही करिए, वैसा कीजिए। इसके बाद आता है ओमिक्रॉन का वैक्सीन आया ही नहीं। सब टॉपिक टू वैक्सीनेशन। ओमिक्रॉन का वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन उसमें रिसर्च चल रहा उसका रिसर्च चल रहा है, लेकिन क्या है पता नहीं। लेकिन ज़रूर उसका वैक्सीन आएगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स निकाला है? गवर्नमेंट रूल्स निकाला है कि 2 वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। 2 वैक्सीन लेना, नहीं तो फाइन बनेंगे। मॉल्स में एंट्री नहीं, फर्स्ट मॉल्स में एंट्री नहीं, स्कूल में एंट्री नहीं, आदि एक्सेट्रास, यहाँ पे एंट्रीज नहीं होती। पता रखना है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और तो और हम क्या सोचे कि वो बहुत आसानी से और भी बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन नहीं, कुछ भी ऐसा मत समझे। कुछ भी नहीं होने वाला है। ओमिक्रॉन वायरस आया है, बच के रहिए। इसके बाद मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये न्यूज़ रिपोर्टर, अब मैं करूँगा डॉक्टर को। सो एक्टर बनने के लिए कौन सा भी रोल करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं रजनीकांत की तरफ एक्टिंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ भिखारी का एक्टिंग करता हूँ, ऐसा नहीं। कुछ भी करना है तो, लेकिन करने दो, खुशी से करना है। ऐसा नहीं कि मुझे वैसा ही करना है। अगर तुमको वैसा ही करने का टैलेंट है तो आप प्रोड्यूसर बनना है, तब आपकी मर्जी से एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। तब आपका मन जैसा चाहे वैसा चल सकता है। लेकिन एंट्री होने में, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री होना है तो कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। कि
लाइक टिकट। उदाहरण के लिए आप बस में ट्रैवल करना चाहते हो, तब तो आपके पास टिकट रहना है ना, तभी तो ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसा ही सही है ये। ट्रैवल करना है के लिए, ट्रैवल करने के लिए बस में टिकट लेना ज़रूरी है। ऐसे ही एक्टर बनने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना है। टिकट का रूल्स, जैसा एक्टिंग सीखना पड़ेगा, बेसिक्स नॉलेज रहना पड़ेगा, ऑडिशंस कैसा देना चाहिए वो पता रहना चाहिए, फेक ऑडिशंस, रियल ऑडिशन ये भी पता रखना चाहिए ना, तभी तो एक्टर बन सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि हाँ मैं एक्टर बन सकता हूँ, ऐसा नहीं, सब कुछ रहना ज़रूरी है, सब कुछ रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब जाने दो। अब मैं डॉक्टर बॉडी लैंग्वेज के बारे में अब मैं बोलना चाहता हूँ। एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेजेस में क्या, मेरे हिसाब से क्या आता है, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेजेस में फेशियल एक्सप्रेशंस आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है। मैं ये सिर्फ एक्टिंग के लिए बोल रहा हूँ, दूसरा बॉडी लैंग्वेज का नहीं, एक्टिंग का बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूँ। तो एक्टिंग का बॉडी लैंग्वेज, हाँ, अब एक्टिंग का बॉडी लैंग्वेज चलते चलते बोलना है। कहाँ गए तुम, चलते चलते कहाँ गए तुम, कहाँ गए, इधर आ, इधर आना, सब यूज होता है। तो बॉडी लैंग्वेज सबको आता है, मामूली आदमी को भी आता है, हमको भी आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज में करेक्ट से रहना, और एक एक करके मारूंगा, ये सही बॉडी लैंग्वेज है, एक एक करके मारूंगा, ये मीडियम है, एक एक करके मारूंगा, ये गलत बॉडी लैंग्वेज है ना। ऐसा सही बॉडी लैंग्वेज करना चाहिए, नहीं फेशियल एक्सप्रेशन नहीं को ऐसा करना है, हाँ को ऐसा रह सकता है, मैं भी ऐसा, और स्माइल और हंसना और थोड़ा सा रोना, सैड, क्या करूँ सैड और रोना और गुस्सा, एंग्री, देख लूँगा तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, देख लूँगा, और गुस्सा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, ये सब बॉडी लैंग्वेजेस है, फेशियल एक्सप्रेशन है। और नेक्स्ट, हैंड पोजिशंस, वहाँ, यहाँ, यहाँ, वहाँ, और कहाँ, कहाँ, किधर, कैसा, how, where, that is all you need to learn. Only then you will learn perfectly, or else you will learn some nonsense things. Learning good thing is very good, and learning correctly is the most important thing in your life. If you are learning correctly, then you are gone. So that is the most important thing in your life. Okay, as I told you. Now we'll move to WH questions, that is कहाँ, where, कैसे, कैसे, कहाँ, कैसे, कौन,
कौन? नाउ सपोज अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है कहाँ, कौन, किधर, वहाँ, मैं देख रहा था उधर, तो बॉडी एक्सप्रेशंस है उधर, इधर, किधर, किधर, कौन, कहाँ, वहाँ, कैसा, कैसा, मुझे पता नहीं कैसा। इसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ वॉकिंग स्टाइल भी परफेक्ट होना चाहिए। वॉकिंग स्टाइल ऐसा हीरो का विलन का कॉमेडियन का की वॉकिंग तो हो गया। अब नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ हाँ नहीं, हो गया वो भी हो गया। बॉडी लैंग्वेजेस हो गया। अब वर्ड्स के साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी जाना है। वो कहाँ गया, मैंने तो नहीं देखा उसको, लेकिन एक दिन ज़रूर उसे देखूंगा। हाँ, तो वर्ड्स के साथ फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट पूरा साइमल्टेनियस रहना चाहिए, सब साइमल्टेनियस रहना चाहिए। मुझे पता नहीं मैं क्यों ऐसा हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर मैं बताता हूँ कि दुनिया क्या है, दुनिया में क्या है। I don't know where to go, I don't know, but one day I will come to know, one day I will come to know that money is not important. So the second point is when you are speaking, you have to go with your actions. Action in the sense body languages. Oh yes, हाँ मैं देखा था, नहीं मैं नहीं देखा, नहीं मैं नहीं देखा, नहीं मैं नहीं कर सकता. This is correct. नहीं मैं नहीं कर सकता. This is wrong. So you should not do some extra curricular activities to make some mistakes. If you are a producer, then you can do anything. Even you can shake your head for no. You can shake your head like this because you are a producer. You can do anything. But if you get a chance, you should follow basic rules. So those are the rules. Now the next thing is when you're speaking. Now, in the second topic, I want to tell you another thing is when you're taking crying, you should take an out. मैंने उसे कहा था उसे जानता, मैंने उसे कहा था, this is correct. You should go along. You should practice with crying, words, and body language. These three things has to be done simultaneously in the act of crying. In the act of, in the fourth additional point is walking. मैं नहीं जानता उसे. Now this is crying. Now laughing. मैं नहीं जानता उसे. मैं नहीं जानता उसे. मैं नहीं जानता उसे. Sad. मैं नहीं जानता उसे. मैं नहीं जानता. Happy. That is funny. मैं नहीं जानता उसे. मैं नहीं जानता.
running tired. मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता उसे. Again, once again, crying. मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता उसे, नहीं जानता. Laughing. नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता. No, sad. मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता. So, body language, words like body language, words, walking, and long breathing words like crying and speaking, laughing and speaking, but the correct words, and the walking and speaking. So combination of all this makes you a little bit perfect. Not perfect, little bit perfect. For perfect there is a perfect. This is that perfect. So these are the basic things you should know. Now let me recall once again. एक था उधर, मैंने नहीं देखा उनको, मैंने नहीं देखा. These are the basics. Coming to the second point, what you have to do is what you have to do is you have to change the expressions. नहीं जानता. Slowly, मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता उसे. वो मेरा ही आदमी है. मैं नहीं मारा है उसे, मैं जानता हूँ क्या कर लेगा वे, तू क्या कर लेगा. So, two expressions together. First, not together, one after the other. First I was crying, then I was laughing. Actually, this is a negative role. Some villains do in movies. Even though he was villain, but actually it is meant for negative role. Now, that is cry. That is cry plus laugh. Now we'll do reverse. That is inverse. That is first we will cry, then we will laugh. No, not sorry. First we will laugh, then cry. मैं जानता हूँ उसे, मैं जानता हूँ उसे, मैं जानता हूँ उसे, पता है, मैं जानता हूँ, मैं जरूर जानता हूँ. मेरा दोस्त था वो, अंकल, लेकिन मैंने ही मार दिया उसे. क्योंकि वो मेरे से आगे निकला, इसलिए मैं मार दिया. मेरा दुश्मन बन गया हो, मेरा दुश्मन बन गया हो, इसलिए मैं उसे मारा, पता है, इसलिए मैंने उसे मारा. So this is the third, second thing we need to tell. Now the other example with two expressions are भाई मुझे थोड़ा भीख दीजिए ना, खाने के लिए पैसे नहीं, पेट में खाने के लिए पैसे नहीं.
मुझे थोड़ा भीख दीजिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, थोड़ा सा 1 रुपये दीजिए भाई, खाना है, भीख भीख कीजिए ना, कुछ भीख दीजिए खाने के लिए। भिखारी समझेगा मुझे। मैं चाहे तो तुझे भीख देता हूँ, लेकिन मैं भीख नहीं मांगता, लेकिन मैं नाटक करता था। समझ गया? That is second thing. Now, second thing is मैं चाहे तो भीख दे सकता हूँ, मुझे भिखारी समझ गया तू? नहीं ना। This is the second one. First I was sad, then I was laughing. This is the second example. Now we'll move to third example. The third example is hey, क्या सोचा अपने आप को? अपने आप को क्या सोचा है तू? भी तू ही जीतेगा, कभी तू ही जीतेगा, मैं नहीं जीतना चाहता। क्या सोचा अपने आप को? आजकल नहीं, मत मारो, मैं कुछ भी नहीं सोचा, मत मारो। First I was angry, then I was fearing. The the fourth example of that is now we'll do 3 expressions. अरे मैंने भाई, मैंने जीतूंगा, मैं जीतूंगा। अरे क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार। लेकिन मैं पैसे वाला बन गया पैसे वाला, लेकिन अब मैं रो रहा हूँ। 3 expressions. Now the next thing is okay. क्या किया था? Now we'll move to another point. Who said characters? That is the third thing. First I spoke about body language. Second I spoke about 2 expressions. And this is maybe third or fourth. The third was I think 2 or 3 expressions together. Maybe this is the next. So next thing is what the next thing is. We'll move to characters. So you should this is very important. You should know characters. That is profession. Something like professionals, jobs, posts, etc. Many things. Examples, for examples, doctors, lawyer, police, engineer, bank manager, watchman, hero, king, villain, and so now if you want to act like doctor, you should know some basic things of doctor. What he does. The role of doctor is to examine a patient and advise and to do some operations. That is the role. That is the basic things of doctor. If you learn these things, you can make a dialogues or you can do some acts. And another example is king. Suppose if you want to act like a king, you should know what king does. King does. He will manage the kingdoms and he will take care of his soldiers and ministers and the people of his kingdom. See, that is citizens of his kingdom. So if you know this thing, you can act like him. This, and he will, after knowing that, again the lawyer. What lawyer does? Lawyer takes care of cases
and handles the cases and does many such things. And what watchman does? Watchman does. He will stand like this, and he will rise up like that. And what rowdyism does? Rowdyism does speaks rudely to the people who are surrounded by him. He will speak rudely to him. Hey, you uthave, ye uthave. And he will have some links with the police, cops and ministers. So and bank manager. What bank manager does? Will take care of the money of the bank. He will take care of the money of the bank, and he will take care of the his employees, and many things. If anything goes wrong with the bank manager will be the responsible for it. He will take the responsibility of such things. If anything wrong goes, anything goes in a bank, then bank manager will take care of it. So he will be responsible for it. Now, the next thing is, if you are a shopkeeper, you should bring items to the store, and you should give the change to the customer, and you should explain about the products to the customer. For example, chai le lo, 5 रुपए. भाई साहब चाय लीजिए ना. That. So these are the expressions. And these are the some basic stories of some characters. And if you are autopilot and you start a train, red signal arrives, then you should press something. So you should take care of the train, engine, etc. If you are railway master, train master, signal master, you should show that flag that I don't know what they call us. And if you are a TT, then you should ask the ticket to the customer, to the passengers, and check who is not traveling with the ticket, and who are not traveling with the tickets. And if you are a police, then you should check who is taking care of, who is robbing something, or who is doing rowdyism in the city. So after knowing this, why you have to know this is you can act easily. Without knowing this, you cannot act easily. That subject is there now. In all the specifications, there are some subject. Example, if you are a shopkeeper, there will be things. Things things can be anything: blankets, purse, glass, bottles, computer, desk, and electrical items. If you are a doctor, you have to deal with coronavirus patient, heart patients, lungs patient, brain patients, and even that some specifications are there. So those are the subjects. The subject or object they called, but I think it's object. Subject means what? Object, sorry. Yeah, it is called as object. Now the next thing is what object sits to the subject is important. Now the king walks. Now what he does, after knowing the basic things, should know how he acts. To know this, you should watch some movies, some super movies like Bahubali, Kabali, etc. Then better you can watch old movies to get some additional information. Now, for example, we move to the next thing. How to become a character. So to become a character, you should think like them. You should think as your real character of that. Suppose if you are acting as a king, think you are a king.
and think in that language. Suppose if you are acting in Kannada, think in Kannada. Suppose if you are acting in English, think in English. Suppose if you are acting in Hindi, think in Hindi. Now, suppose if I want to act like a king, yeah, if you walk like this, doctor will walk like this. Vakil, lawyer, in wear a jacket and walk like this. Shopkeeper, ले लो भाई ले लो, walk like this. And the watchman will hold a gun and walk like this. So walking. Those are the walking. Oh, if you want to walk like a hero, walk like this. Suppose if you want to walk like a handicap, walk like that. So these are the things to be considered while walking. Now then, next thing is, to knowing these two things, the third thing comes in a character is what character says to whom, to his surroundings, environment. For example, what kings says to the soldier, or what kings, what soldiers asked to the king. See, this is the story. Now, now the story starts here. King's walks. Now soldier comes. The kings ask, hey, tell me, what do you want? The soldier says, sir, I want 1 kg of gold to make my children's marriage. Can you please give me? Okay. Yeah, I will give you cake. Oh, he will receive and he will go.